हेलो गाइज, इट्स मी बासु एंड आप देख रहे हैं बासु आर्ट ट्यूटोरियल। सो गाइज, मैं आज एक सनराइज का सीन ड्रॉ करके दिखाऊंगा जो कि मैं यूज करूंगा आर्टिस्ट का वाटर कलर। गाइज देख सकते हैं मेरे पास से आर्टिस्ट का वाटर कलर जो कि 24 सेट का है इसके अंदर कलर। सो मैं इसका यूज करके आज ड्रॉ करूंगा गाइज। सो एंड तक देखते रहिए, मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज फर्स्ट मैं पेंसिल का यूज करके रफली आउटलाइन बनाऊंगा, उसके बाद मैं सेटिंग करूंगा गाइज। देख सकते हैं मैं आउटलाइन आर्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ गाइज। गाइज मैं फर्स्ट पेपर को वाटर से भिगाऊंगा, उसके बाद मैं कलर का अप्लाई करूंगा गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। कलर को अच्छे तरह से मिक्स करके यूज करेंगे गाइज। अभी मैं फर्स्ट टर्न का अप्लाई कर रहा हूँ गाइज। सो लेट्स डू। मैं फर्स्ट टर्न को लाइट करके दे चुका हूँ, देख सकते हैं गाइज। अभी मैं सेकंड टर्न को 15 मिनट के बाद दूंगा, जो कि फर्स्ट टर्न सूखने के बाद गाइज। सो जस्ट वेट एंड 15 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डू। फिफ्टीन मिनट्स हो चुका है गाइज। अभी मैं डार्क कलर का यूज करके सेकंड टोन अप्लाई करूंगा। सो लेट्स डू।
गाइस मैं सनराइज का सीन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, देख सकते हैं ये है सनराइज का सीन गाइस। देख सकते हैं मैं आर्टिस्ट का वाटर कलर यूज करके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। सो गाइज आप लोगों को ये ड्राइंग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड give a big thumbs. Thanks so much for watching to my video.